Day 3 in New York. Subscribe to Interspices. One of the icons of New York City. Yeah! Ferry हमने board कर ली है and the cruise is about to start. Times Square की ये जो सड़क है ये ब्लॉक हो जाती है. See you around. Assalamualaikum, namaste, sat sri akal, ahlan wa sahlan to all our friends and viewers around the world. Welcome to your favorite YouTube channel, Interspices. मैं हूँ इरफान, आपका मेज़बान, and welcome to Day 3 in New York. बड़ा ही अच्छा सा, there's this nice little cool breeze right now. Sun भी बाहर आया हुआ है. So all in all, it's a great weather to be out and about in the city of New York, the city that never sleeps. And again, what I'm liking about New York is, even though it's my first time over here, it's really nicely planned. Like everything is like grid. So it's like, straight and lines cut हुई हैं. Imagine like a rectangle cake और उसके ऊपर फिर जो है बड़ी अच्छी तरीके से slices हुई हैं. So it's really easy to, navigate the streets over here, and you can just, use your Google Maps or whatever, direction finding app that you use, and it's very easy to get around. It's very pedestrian friendly as well, so you can walk to most of the destinations. Right now I'm just going towards Times Square again. Yes, again towards Times Square, because वहाँ से जो है hop on hop off बस पकड़नी है, and then आगे जाके फिर आज के दिन की जो है ना सारी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है. बस पकड़ते हैं वहाँ से और आज के दिन का आगाज़ करते हैं in the search of taste, जायका and ज़ौक़ of नहीं इस्तांबुल नहीं of New York in USA. Let's go. बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है and I'm at the world famous the Rink, जहाँ पे like in December, Christmas के टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्री लगती है. ये जो नीचे आप देख रहे हैं that all is like ice, and इसके ऊपर स्केटिंग वगैरह हो रही होती है. Statue of Prometheus. Just on the hop on hop off bus, exploring New York, proper tourist style. So right now we just saw the Empire State Building. Again, one of the icons of New York City. King Kong movie आपने देखी हो. That was, the Empire State Building was featured in the King Kong movie as well. देखने के लिए जगहें काफ़ी है, but it's a race against time right now. One of the oldest churches in New York. It's older than America as well, apparently. At one point of time, this was the tallest building in New York. This week we are at Pier 54 and we are on the observation deck, rooftop कह लें, rooftop of Pier 54, and that's the views of the Hudson River that we're getting from the rooftop of Pier 54. Looks really nice. I'm really intrigued कि ये क्या structure है. बड़ा ही खूबसूरत सा structure यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे भी जाके check करते हैं कि क्या structure है, because it looks really nice. It looks like, like little flowers on top of the Hudson River. So इसको check करते हैं कि ये क्या है and then फिर आगे चलते हैं. So there's a really nice food court as well over here inside Pier 54. अगर आपको कुछ, like you want to grab some snacks or something, coffee वगैरह लेनी है, you can pick it up from here and then carry on exploring. Plus the helicopter tours. It's like a little island on top of the Hudson River where people can come and, walk around. So basically Little Island at Pier 55 is an artificial island. It's a public park. Hudson River पे बनाया हुआ है इन्होंने. It's for people to appreciate nature and come and observe the Hudson River. Best thing, it's free. So that's Pier 54 over there. और यहीं कहीं पे जो है Titanic के survivors भी, like when they got brought on shore, I think so they came over here somewhere. So behind me is the Hudson River. Over there in the distance I can see the Statue of Liberty as well. वो वहाँ पे कहीं कोने में Statue of Liberty भी है. So एक तरफ ये पूरा nature है आपके पास on the Hudson River. Yachts वगैरह चल रही हैं, boats चल रही हैं, and then on the other side is the city line. So on my back is Manhattan.
सामने न्यू जर्सी है पूरा and बीच में हडसन रिवर. Thousands and thousands of people every day commute from New Jersey to Manhattan for their work and stuff. So ये तो था Little Island. अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं what else is there. Just opposite Pier 54, block के पीछे, like there is this market called Chelsea Market. Pick up souvenirs. There's a food court over here. Bakery वगैरह है यहाँ पे. You can pick up some sandwiches or bakery items. Lots of chocolates over here. These are like their own in-house products. Different types of cheeses over here. Blue cheese, mature cheese, all that good stuff over here. It's like you're, you know, like एक bazaar type की vibe आ रही है. I'm sure it's like a touristy spot. Prices are going to be high. Tacos, burritos, big things, black seed. Almost 11 o'clock. So यहाँ से निकलते हैं. अपने मतलब का कुछ नज़र नहीं आ रहा. तो ऊपर चलते हैं. 3 more hours and then need to make a move to the airport. So that was the Chelsea Market, just opposite Pier 54. अब जो है फिर से वो क्या नाम है hop on hop off पकड़ते हैं. अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं. So just in time, got a ticket for the Circle Line cruise, which starts at 12:30. It's a 1.5 hour cruise which takes you around the Hudson River on the iconic, like landmarks of New York City. Almost 1.5 hour cruise, which gives us like, it's going to depart at 12:30, so that's 1:30, 2 o'clock we should be back, inshallah. And then, we can just make our way back to the hotel, pick up our luggage and then move on towards the airport. I think अच्छा हो के Chelsea Market में ज़्यादा time waste नहीं किया because कुछ मतलब का था नहीं वहाँ पे. So boarding is going to start in a while. We're just waiting for everybody to come out and then we can just form a line over here and then start boarding. If you buy the day pass, I think it would be cheaper because a lot of attractions get combined in that. You get top 10 attractions and you can save like $45 or something like that. But right now I paid $45 for this cruise. Okay जी, ferry हमने board कर ली है. We're on the ferry right now and the cruise is about to start. Different ferry companies हैं यहाँ पे. There's North River Lobster Company, कुछ speedboats वगैरह भी हैं. That's called the Beast. Right now we are on the shoreline. So इस वक्त जो है हम लोग Hudson River पे हैं. Our cruise has started. So that's the One World Trade Center. And apparently it's one of the tallest buildings in New York. So now the ferry has turned. Manhattan is now on my right and Brooklyn. ये पूरा अब जो है Brooklyn आ रहा है. So this is the Brooklyn area. So Manhattan और Brooklyn के बीच में Hudson River and we on the ferry enjoying ourselves. बड़ी अच्छी cool breeze चल रही है. वो भाई साहब जो है अपनी तकरीर कर रहे हैं and उनकी तकरीर सुन के नींद आना शुरू हो गई थी. थोड़ी देर के लिए वो चुप हुए तो आंखें खुली हैं because बातें उनकी सुन के जो हिस्ट्री बता रहे थे वो कि भाई ये बिल्डिंग 1800 में बनी है, ये बिल्डिंग 1850 में बनी है, ये ब्रिज इसलिए बना, वो ब्रिज इसलिए बना. थोड़ी सी नींद आना शुरू हो गई थी. सामने जो है आपको नज़र आ रहा है that's the Black Tower. It's the tallest tower in Brooklyn. सामने आपको Statue of Liberty भी नज़र आ रहा है. But now we're heading to the Statue of Liberty. She's wearing green today. Next up, the money shot, Statue of Liberty. We just found ourselves a new subscriber, my man Arjun over here. Arjun, welcome to our YouTube channel, Into Spices. How are you finding New York?
It's great. I love it. Yeah? And I'm happy to be on the channel. Subscribe to Into Spices. Amazing. So what did you find really nice that's different from, let's say, to Vancouver over here? Is it the food? Is it the sightseeing? What is it? Yeah, the food's really nice and the sightseeing. I love Brooklyn Bridge. Okay. Where have you been so far? I've been to Brooklyn Bridge. I saw the World Trade Center. Nice. And the Empire State Building. Amazing. Yeah. Keep following, share it with your friends and family, and see you around. So that was a good tour on the ferry. I'm glad we got a chance to do it. Really nice to see all the, iconic monuments of New York and know a little bit about the history. At times it did get a little bit boring, but again, it's always nice to know a little bit about the history of these, buildings, these massive skyscrapers that are, all around the New York skyline, basically the Empire State Building and all the other ones. So it was good. बहुत ही मज़ा आया. It was really, very well explained. The tour guide was really nice. He had in-depth knowledge about everything. And overall, the boat, the ferry cruise, it took exactly 1.5 hours. I mean, it left at 12:30, 2 o'clock on the dot, we're back on the port. I mean, that's precise timing. So, highly recommend it. I mean, if you're in New York, do check it out. Circle Line. And I'll leave the description and the links to this place in the description box below. So, yeah, check it out. Yeah! Viewers, मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं World War II के ज़माने की US Navy का aircraft carrier. It's been converted into a museum. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि planes वगैरह खड़े हुए हैं. You can actually go up on this ship and browse around. It's big because it's a museum right now. But right now I think so वापसी का जो है वो करना पड़ेगा इंतज़ाम because time is running out and I hope I can make it in time for my flight and airport का check-in process वगैरह जो होता है. But this looks really cool. Inshallah, next time when we come back, we're going to visit this museum and know a little bit more about the history of this aircraft carrier that took part in the World War II war. Something unique on Times Square that I haven't seen in any of the online videos वगैरह मैंने कम से कम नहीं देखा. अगर आप लोगों ने देखा है, किसकी वीडियो में देखा है, let me know in the comment section. But Times Square है पीछे, but आप देख सकते हैं मैं सड़क के बीच में खड़ा हुआ हूँ और आप सोच रहे होंगे कि भाई सड़क के बीच में क्यों खड़े हुए हो, क्या क्या प्लान है, सड़क क्यों ब्लॉक की हुई है. तो once in a month टाइम्स स्क्वायर की ये जो सड़क है ये ब्लॉक हो जाती है और यहाँ पे लगता है स्ट्रीट फूड न्यूयॉर्क at its best over here. So you got corn on the cob over here. Ooh, nice. So candy fruits. Look what they have here. Fresh fruits over here. Pineapple, strawberries, all that good stuff. Oh, nice. From sweet to savory. The world of empanadas. Veggies, spinach and cheese. म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ आउट एंड अबाउट और मौसम भी साथ दे रहा है माशाल्लाह, तो इट्स गुड, इट्स नाइस. एनीवेज आगे भी है कुछ, बट दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टाइम्स स्क्वायर स्पेशली. अंटिल वी मीट अगेन टाइम्स स्क्वायर, आई सी यू लेटर आई गेस. और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यू नेवर नो इनटू स्पाइसेस पे नेक्स्ट व्लॉग कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से आए. हो सकता है उसी कंट्री से आए या उसी सिटी से आए जिसके बारे में आप ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो. यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट आइटनरी टू हेल्प यू आउट इन योर ट्रैवल प्लान्स. सो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू इनटू स्पाइसेस बिकॉज मज़े की वीडियोज़ हमारे चैनल पे इंशाल्लाह आती रहेंगी. एंड आप लोगों के लिए वी आर गोइंग टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग द बेस्ट प्लेसेस टू ईट, बेस्ट थिंग्स टू डू around the world. So all we need from you is a like, a share, a comment and a subscribe. I'm not asking for too much, so hit the like button, share कर लें friends के साथ, family के साथ. If you know anybody who's coming to either Turkey कोई जा रहा हो, कोई अगर USA जा रहा हो, New York आ रहा हो, Canada आ रहा हो, from USA, if somebody's traveling from USA to Canada to experience halal food, share our playlist with them. I'm sure they'll find some good restaurants that they would like to try out when they're visiting Canada, especially Toronto में काफ़ी सारे हमारे फूड की व्लॉग्स की सीरीज़ है पूरी कैनेडा फूड एंड ट्रैवल के नाम से.
in the playlist. So check that out as well. Hopefully किसी ना किसी की हेल्प होगी, एंड हेल्प होगी तो किसी ना किसी की दुआ लगेगी, और अगर किसी की दुआ नहीं भी लगती तो हम तो हैं ही कि भाई सबके लिए सब हंसी खुशी रहें, अमन व अमान में रहें. गाइस ऑलमोस्ट टच एंड गो सिचुएशन है, इस वक्त जल्दी से भागना है बोर्डिंग गेट की तरफ. अब थोड़ी देर में बताता हूँ कि व्हाट्स द सीन, बट राइट नाउ आई जस्ट नीड टू मेक इट टू द बोर्डिंग टर्मिनल. व्यूअर्स, फाइनली वी आर एट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट टू कैच आवर फ्लाइट बैक टू टोरंटो. थोड़ा सा रास्ते में मसला हो गया था. ऊबर ड्राइवर जो ऊबर टैक्सी हमने ली थी फ्रॉम द होटल, उसका आधे रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, एंड ही ड्रॉप मी इन द मिडल ऑफ नोवेयर. कि भाई मुझे यहाँ पे क्या टैक्सी मिलेगी. उसने कहा कि मेरे पास स्पेयर नहीं है, सो आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड टू गेट अ स्पेयर. एंड देन ही कुछ उसने अपने किसी दोस्त को कॉल किया, कुछ तो स्पेनिश में कुछ बातें की वगैरह. एनीवेज, one way or the other he got me into another Uber cab. So thank you very much. If you're watching this, thank you for getting me into that second Uber. और वो ऊबर वाले ने भाई साहब, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के भाई साहब थे. फुल स्पीड उन्होंने लगाई एंड ही गॉट मी ओवर हियर जस्ट इन टाइम. सो बोर्डिंग वगैरह हो गई, बैगेज चेक इन हो गया. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट. व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूयॉर्क की मिनी सीरीज़ पसंद आई होगी. वीडियोज़ अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली विद दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क. उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर. अल्लाह ने के बाद. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in the overhead bin. Please take your seat and fasten your seatbelt, and also make sure your seatbelt and folding trays are in their full upright position. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. Thank you and enjoy your flight.